S. Gole today took over as the new Chief Minister of the state. Governor Ganga Prasad administered the oath of office in secrecy to Mr. Gole and his Council of Ministers in Palzor Stadium at Gangtok amidst a huge gathering of people. The portfolios will be allotted later. The Council of Ministers who took oath are Kunganima Lepcha, Sonam Lama, B.S. Pant, Manikumar Sharma, Arun Upreti, Loknath Sharma, Ningma Norbu, Karma Lode Bhutia, Bing Hang Suba and Sanjit Kharel. SDA party president and former Chief Minister Pawan Chamling and his MLAs had boycotted the swearing-in ceremony at the last moment. In Telangana, several places are reeling under heat wave conditions. Met officials warn that the similar conditions will continue till the 31st of this month. More from our correspondent. The busy markets and main roads in Hyderabad, which otherwise witness bustling activity, are wearing an empty look these days, especially during afternoons due to scorching heat. The temperatures in the capital city are crossing 44 degrees Celsius. The government has postponed opening up of schools after summer vacation by 2 weeks due to heat wave conditions that grapple the state. In districts it is much worse. Northern and eastern districts of Telangana like Manchiryal, Jagatyal, Adilabad, Asifabad, Bhupalpalli and Kottagudem have recorded above 47 degrees Celsius yesterday. Since morning, people in these areas are suffering scathing heat. Even today, it may be recalled that Nilwai of Manchiryal district recorded 47.8 degrees Celsius during the past 24 hours. Lakshmi, Hyderabad. Heat wave conditions continue to prevail in Odisha, giving people a tough time. The mercury hovered between 44 and 46 degrees Celsius in western and interior Odisha districts during the past several days. In Maharashtra, heat wave conditions are likely to prevail in Vidarbha and Marathwada areas with temperatures ranging from 44 to 46 degrees Celsius. More from a Mumbai correspondent. The Indian Meteorological Department has informed that dry and warm northwesterly and westerly winds were prevailing over northwest and central parts of the country, following which the Vidarbha and Marathwada regions of the state are experiencing heat wave. Besides, there has been less pre-monsoon rainfall in Maharashtra this year, which has further aggravated the heat wave condition. Over the weekend, Chandrapur recorded its maximum temperature at 46.8 degrees Celsius, followed by Nagpur at 46.3 degrees Celsius and Brahmapuri at 46 degrees Celsius. The heat wave is likely to continue for another 3 to 4 days. The IMD also said despite rainfall in few parts of Maharashtra, the regions would see no relief from the sweltering weather. On the other hand, Mumbai recorded a maximum of 34.4 degrees Celsius and a minimum temperature of 26.5 degrees Celsius over the last 24 hours. The IMD also predicted delay in southwest monsoon over Maharashtra in June, due to which rainfall in Mumbai will occur almost a week later. Sonali Ghadiyar Patil, Mumbai. In Rajasthan, normal life has been affected due to severe heat at most of the places in the state. The heat wave conditions badly affected the western part of the state. Border areas and many districts of the western Rajasthan are heating due to rising temperature. Special arrangements have been made for BSF personnel engaged in patrolling at border areas to save them from severe heat. Cold rooms have been set up for these Jawans. Highest 44 degrees Celsius temperature has been recorded in Phalodi of Jodhpur district. Mercury has been recorded above 41 degrees Celsius in many districts, including Jaisalmer, Churu and Kota. Around 40 degrees temperature has been recorded today in capital Jaipur too. Jitendra Trivedi, Jaipur. The nation pays homage to its first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru on his 55th death anniversary today. Former Prime Minister Dr. Manmohan Singh, UPA Chairperson Sonia Gandhi, former Vice President Mohammad Hamid Ansari and Congress President Rahul Gandhi paid tributes to Pandit Nehru at his memorial Shanti Van in the national capital. An all-religion prayer meeting was organized in the memorial premises. In a tweet, Vice President M. Venkaiah Naidu said he will always be remembered for his contributions to building a modern India. Prime Minister Narendra Modi also paid tributes to Pandit Nehru on his death anniversary. Remembering the former Prime Minister, Congress President Rahul Gandhi in his message said that Pandit Nehru's contribution in building strong, independent, modern institutions has helped democracy survive in India for over 70 years. Prime Minister Narendra Modi today said his government will ensure Sabka Saath Sabka Vikas and there is no alternative to transparency and hard work. Mr. Modi was addressing the party cadres in Varanasi on his Thanksgiving visit. हम इतने सालों से सत्ता पे आए हैं, हम विभाजनकारी बनते के नहीं हैं। जो लोग अपने आप को एकता का ठेकेदार बनाते हैं, उन्होंने सिर्फ आंध्र का विभाजन किया, आज भी वहां पर शांति का माहौल नहीं बन पाया है।
तेलंगाना और आंध्र। और हम वो लोग हैं जो एकता के मंत्र को लेकर के चलते हैं। हम उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड बना दे, दिलों में आग नहीं लगने देते। हम बिहार में से झारखंड बना दे, दिलों को चोट नहीं पहुंचाते हैं। हम मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बना दे, प्यार में कोई कमी नहीं आने देते। क्योंकि सबका साथ सबका विकास ये मंत्र हमारी रगों में है, हमारी जहन में है। Mr. Modi paid tributes to the BJP workers who laid down their lives for the party's cause. कश्मीर में हमारे लोगों ने जान की बाजी लगाई है, केरल में है, हमें मौत के घाट उतार दिया जाता। शायद हिंदुस्तान में कोई एक राजनीतिक दल इतनी व्यापक प्रकार से हिंसा का शिकार हुआ है और उसके मूल में एक जो नैरेटिव, हेट्रेड का नैरेटिव लगातार बनाया गया है, उसी का परिणाम है कि हिंसा को एक प्रकार से मान्यता दी गई है। ये हमारे सामने बहुत बड़ा संकट है। दूसरा हमारे सामने संकट है, बाबा साहब आंबेडकर, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने सार्वजनिक जीवन में छुआछूत को, समाज जीवन में छुआछूत को, सामाजिक व्यवस्था में छुआछूत को खत्म करने के लिए अपनी जिंदगी खपा दी। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में राजनीतिक छुआछूत दिनों दिन बढ़ती चली जा रही। Mr. Modi reiterated that the BJP is committed to uphold the values of democracy. भारत के लोकतंत्र में इस प्रकार के वृत्ति वाले लोग हैं, उनसे भी मैं आज काशी की पवित्र धरती से पुनर्विचार करने के लिए आज प्रार्थना करना चाहता हूँ। बहुत हो चुका, नए सिरे से सोचना शुरू करो। कमियां हम में भी होगी, लेकिन हमारे इरादे नेक है। लोकतंत्र कोई कुछ भी कह दे, आज हिंदुस्तान के राजनीतिक तख्त पर ईमानदारी से रग रग में लोकतंत्र को लेकर के जीने वाला कोई दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। हम शासन में आते हैं तब भी हम सबसे ज्यादा लोकतंत्र की परवाह करने वाले लोग होते हैं। Our correspondent who covered the Prime Minister's visit has more. People of Varanasi thronged to the streets to welcome their leader. Prime Minister Narendra Modi passed through a 6-kilometer-long stretch from police line to Kashi Vishwanath to thank citizens of Kashi who showed faith in him and then took blessings of Lord Shiva at the temple. All along the route, huge crowd was waiting in the scorching heat just to take a glimpse of Prime Minister. More than 500 artists showcased the diverse cultural heritage of Uttar Pradesh all along the way. BJP workers showered flower petals on their iconic leader, and Prime Minister Narendra Modi was visibly mesmerized by this grand welcome. Sushil Chandra Tiwari, Varanasi. After the swearing in of Naveen Patnaik as the Chief Minister for the 5th consecutive term on Wednesday, 6 to 7 lakh farmers under the Kalia scheme will receive the financial assistance of 5,000 rupees on the same day through direct benefit transfer. The rest will get the amount within the next 2 to 3 days. More from a correspondent. Naveen Patnaik during his election campaigns had promised to provide first installment of a financial assistance to the eligible under the Krushak Assistance for Livelihood and Income Augmentation Kalia scheme on the first day of the formation of the BJP government in the state. Around 25 lakh farmers of the state will get the first installment. Earlier this year, around 42 lakh farmers of Odisha had received the first installment of a financial assistance under the scheme. Later, the amount could not be given to the rest of the beneficiary farmers as the model code of conduct came into force in the state for the elections. Naveen Patnaik, who led the party to the huge victory in Odisha Assembly elections, is scheduled to be sworn in as Chief Minister for a record of 5th consecutive term on May 29th. SN Patnaik, Sambalpur. With that, we end this edition of Radio Newsreel, edited and produced by Manmohan Joshi. Assistance in production by Abhishek Kumar Singh. Your narrator, Abhishek Mukhopadhyay. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio. नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ही कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में। अगले 15 मिनट खेल जगत की हम ढेर सारी खबरें लेंगे, उन पे चर्चा भी करेंगे। स्वीकार कीजिए लवलीन निगम का नमस्कार। और खेल खबरों पे चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर कमेंटेटर गौस मोहम्मद। गौस नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। शुक्रिया लवलीन, नमस्कार।
तो बस देखा है फ्रेंच ओपन साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम शुरू हो ही गया। कल आईसीसी वर्ल्ड कप की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, अभ्यास मैच खेले जा रहे हैं। लेकिन आज हम शुरू करते हैं शूटिंग से, जहां से अच्छी खबर है सौरभ चौधरी की। जबरदस्त उन्होंने गोल्ड जीता है और अपने ही रिकॉर्ड तोड़े हैं जो जूनियर का और जो पिछले फरवरी में बनाया। तो नमस्कार उनको हमारी तरफ से जी। इस पे भी चर्चा करेंगे और भी ढेर सारी खबरें लेंगे। पहले सुर्खियां। ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में सौरभ चौधरी ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में राफेल नडाल और रिचर्ड गैस्क्विट दूसरे दौर में पहुंचे। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के अभ्यास मैच में कल भारत का मुकाबला बांग्लादेश से और 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी इस साल अक्टूबर में गोवा करेगा। गौस मोहम्मद भारत के युवा निशानेबाज 17 साल के हैं सिर्फ सौरभ चौधरी, जिन्होंने जर्मनी के म्यूनिक में ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। सौरभ ने फाइनल में 246.3 का स्कोर बनाया। नई दिल्ली में जब वर्ल्ड कप हुआ था उसमें 245 उनका अपना ही था रिकॉर्ड जो उन्होंने तोड़ा। टोक्यो ओलंपिक के लिए वो कोटा पहले ही हासिल कर चुके हैं। भारत का म्यूनिक वर्ल्ड कप में दूसरा गोल्ड कल अपूर्वी चंदेला ने जीता था। लेकिन एक सवाल जो अचानक ये आता है कि वर्ल्ड कप में तो हम जीत लेते हैं, फिर ओलंपिक में ऐसा कौन सा दबाव आता है या क्या हो जाता है कि हम वहां गोल्ड नहीं जीत पाते? लवलीन, ये सवाल उठता है तीरंदाजी में भी कि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप बहुत सी खेलने जाते हैं हमारे आर्चर, वो गोल्ड निशाने साधते हैं, अच्छे निशाने साधते हैं और उसके बाद समझ नहीं आता कि हवा में क्या फर्क आ जाता है। बेसिकली जब आप पेशेवर हैं, जब आप इंटरनेशनल इवेंट्स में जाते हैं, तो किसी भी हवा के रुख को अगर आप में ताकत है, मेंटल टफनेस है और आपका मैच टेम्परामेंट है, बाहर अच्छा एक्सपोजर मिलता है, तो हवा के रुख को आप अपनी तरफ मोड़ सकते हैं, जिसे सौरभ चौधरी ने किया है। अपने मैं मानता हूं, लेकिन ये ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गए सौरभ चौधरी। आपने जैसे बताया फरवरी में जो दिल्ली में आयोजित हुआ था 245.0 में उन्होंने गोल्ड जीता था। उसके बाद इन्होंने जूनियर में भी रिकॉर्ड बनाया था 245.5 का जो कोरिया में हुआ था, उसमें उसको और इसको अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो यानी जो ये लगातार सुधार कर रहे हैं। और लवलीन, एक अच्छी खबर और हमारे पास ये है कि जो राही स्वर्णपत है, हाँ, और मनु बाकर 2 थे, तो राही ने एयर पिस्टल में गोल्ड ले लिया है और 5वें नंबर पे रहे मनु बाकर। तो ये भी बहुत यंग निशानेबाज हैं देखा जाए, जाहिर सी बात है। और अब ये अच्छी खबर है, लेकिन आपने थोड़ा सा मुश्किल में डाल दिया। आपका सवाल भी एक उलझन पैदा करता है। पर यहाँ पे जिस तरह एक के बाद एक उन्होंने अपने देश में गोल्ड जीता, कोरिया में जीता और यहाँ म्यूनिक में जीता, जहां का वातावरण खेल में है, एक बड़ा पेशेवर देश है जर्मनी। खास करके जो ग्रास रूट पे अगर हम हॉकी ले लें, फुटबॉल ले लें, कोई भी खेल ले लें, और वहां पे एक 17 वर्षीय युवा जाके गोल्ड हासिल करता है उस वातावरण में, तो हम ये समझ सकते हैं कि आने वाले ओलंपिक के अंदर शायद वो आपकी जो धारणा पनप रही है उसको गलत गोल्ड मेडल साबित करने में सक्षम हो। या हो सकता है कुछ ऐसा आपको लगता है कि वर्ल्ड कप का एक अलग ऑरा है और ओलंपिक का तो एक अलग ही ऑरा है, वहां पे कुछ ऐसे भी खिलाड़ी आ जाते हैं तो शायद वर्ल्ड कप में ना हो, कंट्री का प्राइड होता है। बेशक बेशक, लेकिन आप मैं इसका उदाहरण दूंगा कि जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, काफी देश है, अगर वो हॉकी में जाते हैं ना, तो वो जो साइड के टूर्नामेंट होते हैं उसमें हमेशा वो कहीं ना कहीं मैच हारते हैं। पर जब ओलंपिक आता है, वर्ल्ड कप आता है, तो वहां पे वो इस तरह की परफॉर्मेंस अलग अंदाज होता है। ये बहुत अच्छा सवाल है आपको, और ये हकीकत है कि हर इवेंट का अपना एक अलग सोचने का स्तर होता है। और यही कहते हैं कि अगर आपकी मेंटल टफनेस अच्छी है तो कहीं भी आप परफॉर्म करेंगे। हम रुक करते हैं साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जो पेरिस में कल शुरू हुआ। आज राफेल नडाल, रिचर्ड गैस्क्विट दूसरे दौर में पहुंच गए। पहले दौर में राफेल नडाल ने जर्मनी के यानिक हैंफमैन को हराया 6-2, 6-1, 6-3 से। गैस्क्विट ने मिश्चा ज्वेरेव को 6-3, 6-3, 6-3 से हराया। महिला सिंगल्स में कैरोलिन वोजिनियाकी को हार का सामना करना पड़ा। कैरोलिन वोजिनियाकी को वोरेनिका कुदेर्मितोवा ने 0-6, 6-3, 6-3 से हराया। मतलब पहला मैच वो एक भी पॉइंट नहीं ले पाई, 0-6 से हारी। उसके बाद
जबरदस्त वापसी 6-3, 6-3 और एक उलटफेर कर दिया। और उलटफेर तो खैर पहले ही दिन हो गया था जब वीनस विलियम्स, एंजेलिक कर्बर वगैरह हार के बाहर हो गई थी। देखिए, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और उसके बाद अब विंबलडन की बात है, तो ये वो टूर्नामेंट है कि जहां वही आपकी ने कहा कि हर मैच इसमें अलग मिजाज का होता है, कोर्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। और यहां थोड़ी हम बात तो कर रहे हैं कि जर्मन या ब्रिटिश नंबर 1 की बात कर रहे हैं, नादाल ने मैच आज जीता पहला, पर हमें अफसोस है कि इसमें अभी कोई भारतीय नजर नहीं आ रहा है। जी जी। और वैसे भी नादाल की बात की जाए गौस मोहम्मद, अक्सर उनका ये आता है कि शायद मेरा ये आखिरी ग्रैंड स्लैम होगा और हर बार जीतते जाते हैं, उम्र उनके ऊपर हावी नहीं हो रही है और बहुत अच्छा जो उनका प्रदर्शन है ग्रैंड स्लैम में होता चला जाता है। नंबर 1 जो है वो उसमें भी रहते हैं, नंबर 2 खिलाड़ी। जी बेशक। और इसके अलावा रॉजर फेडरर, स्टेफेनोस और केई निशिकोरी, स्लोन स्टीफेंस दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। अभी स्टांसलेस वावरिंका का मैच चल रहा है, फिलहाल वो खेल रहे हैं। और अपनी बात करें हम गौस मोहम्मद, हमारा एकमात्र सिंगल्स खिलाड़ी था प्रजनेश गुणेश्वरन, बोलिविया के मार्को डेलियन से हार गए 1-6, 3-6, 1-6 से, यानी सिर्फ 5 सर्विसेज देखा जाए तो वो बचा पाए। उनका पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट था। लेकिन कहीं सिंगल्स में तो खैर देखा जाए हम अफसोस ही है कि कोई खिलाड़ी आता ही नहीं है। ग्रैंड स्लैम क्या, एटीपी में भी अच्छा प्रदर्शन कोई खास नहीं होता है। वजह है क्योंकि बहुत ज्यादा फिजिकल टफनेस चाहिए। और आप देखिए कि कहाँ हमारे विजय अमृतराज, रमेश कृष्ण और उसके बाद लेंडर पेस आए, महेश भूपति आए, एक के बाद एक खिलाड़ी आए जरूर, पर इन टूर्नामेंटों के अंदर अपनी जो झलक, अपनी जो छाप है वो छोड़ नहीं पाए। तो यहाँ कुछ ना कुछ विशेष करना होगा हमारी टेनिस संघ को, क्योंकि इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट में, जैसे डबल्स में हमने अगर महिला की बात करें, सानिया मिर्जा किसी और के साथ मिक्स डबल में जीतती रही है या महिला डबल्स में जीतती रही। हाँ, और पुरुष के साथ भी जो भी उन्होंने किया है तो अच्छा किया है। अब कमी महसूस हो रही है और काफी अजीब लगता है, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों में टेनिस में हमें कोई ना कोई अच्छी खबर मिलती थी भारतीय टेनिस खिलाड़ियों द्वारा, जब वो 3 हमारे पास है। हालांकि कल अगर देखा जाए डबल शुरू हो रहा है, लियांडर पेस बेनेट पेरा की जोड़ी भी होगी, रोहन बोपन्ना मॉरिस कूपर की जोड़ी खेलेगी, दिवेश शरण मार्सेलो डोमिनेर की जोड़ी और जीवन नेडुचेडियन और मिक्सा यूरेव की जोड़ी, ये सब जो है अपने अपने पहले दौर के मैच खेलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लियांडर पेस तो अभी खैर खेल रहे हैं, महेश भूपति, सानिया मिर्जा, इनके बाद या लियांडर पेस का भी अब एक आधी ग्रैंड स्लैम खेलेंगे, एक लंबा वैक्यूम आ जाएगा टेनिस में। बेशक काफी अरसे से लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि लेंडर पेस जो है अपनी विल पावर से, अपने मैच टेम्परामेंट से इतनी लंबी मैराथन इनिंग खेल रहे हैं, उनको सलाम करना चाहिए, क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर में डबल्स में, मिक्स डबल्स में अपने आप को सेमीफाइनल तक लाते हैं और कभी कभी वो जीतते भी हैं। और अभी भी फ्रेंच ओपन में जो भारतीय डबल्स खेलेंगे, डबल्स में हमारे खिलाड़ियों का जो कॉम्बिनेशन, तालमेल और परफॉर्मेंस है वो सिंगल्स हम नील अगर है, लेकिन डबल्स में हम किसी के लिए भी मुश्किल पैदा कर सकते हैं। जी, आगे बढ़ते हैं, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की बात करते हैं, जहां अपने आखिरी अभ्यास मैच में भारतीय टीम कल खेलेगी बांग्लादेश के साथ। पहला अभ्यास मैच न्यूजीलैंड से हम 6 विकेट से हार गए थे। और हमारा जो अगर अभियान की हम बात करें गौस मोहम्मद, 5 जून को साउथहैम्पटन में होगा साउथ अफ्रीका के साथ खेल के। फिलहाल हम बात करते हैं जो भारत बांग्लादेश का कल अभ्यास मैच होगा, उसकी कुछ संभावना जान लेते हैं, मुकेश से फिर चर्चा करेंगे। खिताब के प्रबल दावेदार भारत के इंग्लैंड पहुंचने पर शुरुआत अनुकूल नहीं रही। भारत बल्लेबाजी में अपने शीर्ष क्रम के 3 बल्लेबाजों रोहित शर्मा, शिखर धवन और कप्तान विराट कोहली पर बहुत ज्यादा निर्भर है, लेकिन ये तीनों मिलकर 22 रन ही बना पाए। ट्रेंट बोल्ट की स्विंग लेती गेंदों के सामने शीर्ष क्रम लड़खड़ाने के बाद भारतीय टीम उबर नहीं पाई। नंबर 4 को लेकर लंबे समय तक चर्चा चलती रही, लेकिन पिछले मैच में केएल राहुल इस स्थान पर उतरे और फिर उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। जडेजा ने 50 गेंद पर 54 रन बनाकर विश्व कप के लिए अंतिम एकादश में जगह बनाने के लिए दावा मजबूत कर लिया। वो पहले भी इंग्लैंड में सफल रहे हैं। भारतीय गेंदबाजी की अगुवाई फिर से जसप्रीत बुमराह करेंगे। पिछले मैच में भी उन्होंने 4 ओवर में 2 रन देकर 1 विकेट लिया। बांग्लादेश को विश्व कप से पहले अभी तक अभ्यास का मौका नहीं मिला है। पाकिस्तान के खिलाफ उसका मैच बारिश के कारण बिना गेंद फेंके ही रद्द कर दिया गया था, लेकिन यहाँ आने से पहले बांग्लादेश ने आयरलैंड में त्रिकोणीय श्रृंखला जीती, जहाँ की परिस्थितियाँ लगभग समान हैं। बांग्लादेश की टीम परिस्थितियों से बेहतर तालमेल बिठा सकती है और इसलिए भारत को
सतर्क रहने की जरूरत होगी। मौसम विभाग ने बारिश की भविष्यवाणी की है और ऐसे में मैच देर से शुरू होने की संभावना है। अगर बादल छाए रहते हैं तो तेज गेंदबाज इसका फायदा उठा सकते हैं। वैसे कार्डिफ में बड़े स्कोर बनते रहे हैं और ऐसे में रोहित, धवन और कोहली बड़ी पारियां खेलने की कोशिश करेंगे। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। पहला मैच तो खैर हम न्यूजीलैंड से हार ही गए थे गौस मोहम्मद। अब बांग्लादेश के साथ ये भी बहुत अनप्रेडिक्टेड टीम है। कब किस दिन ऊंट किस करवट बैठ जाए जिसे कहते हैं ना, बड़ी से बड़ी टीम को भी हरा सकता है, छोटी से छोटी टीम भी हार सकता है। सतर्क रहना होगा, बेशक रहना होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप क्रिकेट एक ऐसा फिलहाल दौर आ गया है कि इसका एक उदाहरण देता हूं कि बिच्छुओं की फौज जा रही थी तो किसी ने पूछा इनका सरदार कौन है, तो उन्हीं से एक बोला हाथ रखकर देख लिए। तो यहां पे ये है कि कोई भी किसी की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। अभी न्यूजीलैंड ने पहले भारत को जिस तरह से हराया, तो ये नहीं है कि भारतीय टीम कुछ इसी प्रकार की है कि वो न्यूजीलैंड को फिर अलाउड करेगी, पर फिर भी न्यूजीलैंड एक बहुत बहुत मुश्किल टीम है। उसके मुकाबले बांग्लादेश आजकल कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रही है, जबकि बांग्लादेश में फुटबॉल अब इतनी लोकप्रिय नहीं रही। वहां क्रिकेट नंबर 1 बन गया है, बड़े पेशेवर थिंकिंग है उनकी। मुश्किल मैच होगा जी। और एक और बात जो मुकेश ने बोली, बारिश मुझे लग रहा है न सिर्फ अभ्यास मैच में, शायद बाकी के मैचों में भी कुछ मजा किरकिरा कर सकता है। देखिए, जो क्रिकेट के फैंस हैं और जो भारत में इंतजार कर रहे हैं, जो पिछला मैच बारिश में धुल गया, बिना खेले धुल गया, यानी कोई बिल्कुल साफ ड्राई क्लीन कपड़ा है और वो फिर धुल जाए तो कितना बुरा लगेगा। तो यहाँ पे लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं। और ऐसा वेदर अगर आईसीसी ऐसी जगह कराती है कि उसमें बारिशों में मैच धुलेंगे तो बहुत डिसअपॉइंट होंगे फैंस। एक और खबर वर्ल्ड कप की ही दे दे, मतलब एक अच्छा रोचक खबर आई है कि विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट निदेशक स्टीव एल्वर्थी ने बताया कि इस बार वर्ल्ड कप के मैचों को देखने के लिए 1 लाख से अधिक टिकट महिलाओं ने खरीदे हैं। इसके अलावा 16 साल से कम उम्र के बच्चे भी लगभग 1 लाख दर्शक होंगे, यानी युवा खिलाड़ी इस खेल से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। एक अच्छी और रोचक खबर। आपने आईपीएल देखा होगा, जितने ज्यादा बच्चे आते हैं उसके अंदर और उनके साथ जो लड़कियां आती हैं, उनका जो क्रिकेट के अंदर रोचकता है, या तो वो यूरोपियन फुटबॉल में महिलाएं जो है या बच्चियां जो है बहुत ज्यादा रुचि रखती हैं और बच्चे बहुत रुचि रखते हैं। और उसके बाद जो वर्ल्ड कप क्रिकेट है, आपने बताया 1 लाख से ज्यादा महिलाओं ने टिकट लिए हैं। ये एक अच्छी खबर है क्योंकि बहुत स्पोर्टिंग होती है, उनको खेल समझ आता है जी। और 36वें राष्ट्रीय खेलों की बात करें, गोवा ने दावा किया है कि वो अक्टूबर में इस खेल को होस्ट करने के लिए तैयार है। साथ में उसने आईओए से देरी के कारण लगाए गए 10 करोड़ के जुर्माने की भी जो है माफ करने का अनुरोध किया है। राज्य के खेल मंत्री मनोहर अजगांवकर ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में कोई देरी नहीं होगी। 10 स्टेडियमों को खेलों के आयोजन के लिए तैयार किया जा रहा है और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अक्टूबर से पहले तैयार कर लिया जाएगा। तो ये भी एक अच्छी बात गोवा में। और 36वें राष्ट्रीय खेल, अक्सर राष्ट्रीय खेल को पोस्टपोन करते रहते हैं, लेट्स होप कि अक्टूबर में टाइमली गोवा में हो जाए। जरूरी है क्योंकि यही टूर्नामेंट नेशनल गेम्स ही होते हैं जिसको हमको पता चलता है कई छुपी हुई जो प्रतिभा है वो राष्ट्रीय खेलों से सामने आती है। बेसिक प्लेटफॉर्म खिलाड़ी बेसिक प्लेटफॉर्म है और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं हो सकता। तो यहाँ पे थोड़ा सख्त होना होगा, ये अपनी मर्जी से पोस्टपोन होना नहीं। अगर कोई पोस्टपोन कर रहा है तो कई जगह पे जहां इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है वहां करा देना चाहिए। हमें इंतजार नहीं करना चाहिए कि इसकी पारी है तो वही खेलेगा। आपने देखा होगा अगर कोई फिट नहीं है तो नीचे से ऊपर भेज देते हैं बैट्समैन को, तो यहां भी ऐसे ही करना होगा। हाँ, तो उम्मीद करते हैं गौस मोहम्मद की इस बार राष्ट्रीय खेल हों, क्योंकि यहाँ से बहुत छुपी हुई प्रतिभाएं भी आती हैं जो आगे जाके इतनी निखर जाती हैं कि जिनके बारे में मालूम नहीं होता। और छोटे छोटे राज्यों से अच्छे खिलाड़ी आते हैं, एक मौका मिल जाता है उन्हें खेलने का। बेशक ये बहुत बहुत बड़ा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिससे छुपी हुई प्रतिभाएं सामने आती हैं और ये खेल होने चाहिए समय पे। और मेरे ख्याल से जुर्माना माफ कर दिया जाना चाहिए। आपको रोकूंगी, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं इस प्रोग्राम को समाप्त करने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का। श्रोताओं, शुभ रात्रि। नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार और पार्टी के बीच उचित तालमेल को महत्वपूर्ण बताया। कहा, कार्य और कार्यकर्ता मिलकर आश्चर्यजनक नतीजे दे सकते हैं। भारत ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बिम्स्टेक देशों के नेताओं को आमंत्रित किया। सिक्किम क्रांति मोर्चा अध्यक्ष प्रेम सिंह गोले ने 11 कैबिनेट मंत्रियों के साथ सिक्किम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पेमा खांडू दूसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने जमीन से हवा में मार करने वाली आकाश 1S रक्षा मिसाइल का सफल परीक्षण किया और म्यूनिख में विश्व कप निशानेबाजी की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत के सौरभ चौधरी ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने पार्टी और सरकार के बीच तालमेल का जिक्र करते हुए कहा कि कार्य और कार्यकर्ता आश्चर्यजनक नतीजे दे सकते हैं। सरकार और संगठन दोनों के बीच में सिनर्जी। सरकार नीति बनाती है, नीति पर चलती है। संगठन रणनीति बनाता है। नीति और रणनीति, इसकी सिनर्जी सरकार और संगठन के काम की सिनर्जी का एक प्रतिबिंब होती है और जिस प्रतिबिंब का आज हम सफल, उसका लाभ देश को मिल रहा है। नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपने प्रति प्यार व्यक्त करने के लिए लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है, लेकिन वे काशी के लोगों के लिए एक साधारण कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि वाराणसी में पार्टी का हर कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी बना और सफलतापूर्वक चुनाव प्रचार किया। प्रधानमंत्री ने भाजपा के उन कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने पार्टी के लिए अपना बलिदान किया। कश्मीर में हमारे लोगों ने जान की बाजी लगाई है। केरल में है, हमें मौत के घाट उतार दिया जाता। शायद हिंदुस्तान में कोई एक राजनीतिक दल इतनी व्यापक प्रकार से हिंसा का शिकार हुआ है, उसी का परिणाम है कि हिंसा को एक प्रकार से मान्यता दी गई है। ये हमारे सामने बहुत बड़ा संकट है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश विकास और आर्थिक वृद्धि के रास्ते पर चल रहा है और हाल के वर्षों में इसमें तेजी आई है। उन्होंने कहा कि वे अपने खिलाफ लड़ने वाले विपक्षी उम्मीदवारों के आभारी हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजनीतिक विश्लेषकों को यह स्वीकार करना होगा कि चुनाव के गणित के बाद एक केमिस्ट्री है। इससे पहले श्री मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। भारत ने नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बिम्स्टेक देशों के नेताओं को आमंत्रित किया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि कदम सरकार की नेबरहुड फर्स्ट, पड़ोसी प्रथम नीति पर आधारित है। शंघाई सहयोग संगठन के मौजूदा अध्यक्ष, किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति और मॉरिशस के प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया गया है। श्री मोदी बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेंगे। उत्तर प्रदेश में अमेठी पुलिस ने भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह की हत्या के सिलसिले में आज 3 लोगों को गिरफ्तार किया। राज्य के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने लखनऊ में मीडिया को बताया कि हत्या के पीछे स्थानीय राजनीतिक रंजिश थी। सुरेंद्र सिंह सांसद स्मृति ईरानी के करीबी सहयोगी थे। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि गिरफ्तार लोगों के कब्जे से हत्या से जुड़े हथियार और कपड़े बरामद किए गए हैं। हत्या में शामिल 2 अन्य फरार हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। और कैसे करवाऊं? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। पिंकी का भी आधार अपडेट करवा लो। 5 और 15 साल पूरे होने पर बच्चों के बायोमेट्रिक्स अपडेट करना जरूरी है। ठीक है फिर। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। ये आकाशवाणी है।
सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष प्रेम सिंह गोले ने आज सिक्किम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंत्रियों के विभागों का बंटवारा बाद में किया जाएगा। राज्यपाल गंगा प्रसाद ने राजधानी गंगटोक के पलजोर स्टेडियम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रेम सिंह गोले और उनकी मंत्रिपरिषद को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जिन कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है उनमें कुंगा निमा लेप्चा, सोनम लामा, बेदू सिंह पंत, मणिकुमार शर्मा, अरुण कुमार उप्रेती, सामदोक लेप्चा, लोकनाथ शर्मा, मिंगमा नेरबू शेरपा, कर्मा लोदे भूटिया, भीमहंग लिंबू और संजीव खरेल शामिल हैं। बाद में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मुख्य एजेंडा विकास, शांति और राज्य में स्थिरता बनाए रखना है। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट एसडीएफ के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग और उनके विधायक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ पहली बार सरकार बनाने के लिए तैयार है। 60 सीटों वाली विधानसभा में पार्टी ने 41 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है। ईटानगर में आज विधायक दल की बैठक हुई। पेमा खांडू बुधवार को दूसरे कार्यकाल के लिए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। अपनी विधायक दल की बैठक में भाजपा ने आज सर्वसम्मति से पेमा खांडू को अपने विधायक दल का नेता चुना। बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक जेपी नड्डा भी उपस्थित थे। बाद में श्री खांडू ने राज्यपाल डॉक्टर बीडी मिश्रा से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा किया। उम्मीद है कि उसी दिन उनकी मंत्रिपरिषद भी शपथ लेंगे। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, ईटानगर। ओडिशा में नवीन पटनायक 29 मई को लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल भुवनेश्वर के प्रदर्शनी मैदान में आयोजित एक समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। वाईएसआर कांग्रेस के नेता वाईएस जगनमोहन रेड्डी 30 मई को विजयवाड़ा में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन ने उन्हें सरकार बनाने का न्यौता दिया है। इस बीच जगनमोहन रेड्डी ने बेहतर प्रशासन के लिए हर विभाग पर श्वेत पत्र जारी करने का फैसला किया है। जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के अपनी पार्टी के प्रयासों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। असम में राज्यसभा के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कामाख्या प्रसाद तासा को मैदान में उतारने का फैसला किया है। पार्टी के विधायक दल की आज गुवाहाटी में हुई बैठक में यह निर्णय किया गया। प्रदेश में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 7 जून को चुनाव होगा। दूसरी सीट के लिए असम गण परिषद के उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र प्रसाद वैश्य उम्मीदवार होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये दोनों सीटें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और एस कुजूर का कार्यकाल 14 जून को समाप्त होने के कारण खाली हो रही हैं। असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा ने लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारण अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने कहा है कि हालांकि पार्टी ने राज्य में 14 में से 3 सीटों पर जीत हासिल की है, लेकिन वो इससे संतुष्ट नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से किसी और को इस पद पर नामित करने का आग्रह किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के इस्तीफा देने को अनावश्यक बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन राज्य में शानदार रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने गुरदासपुर में अपनी हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस ने हाल ही में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में हुए विचार विमर्श के बारे में मीडिया की अटकलों और अफवाहों को अनावश्यक और अनुचित बताया है। नई दिल्ली में आज पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मीडिया से कहा कि पार्टी के कार्यक्रम के बारे में अधिकृत ब्यौरे की प्रतीक्षा करें। पश्चिम बंगाल में सौरभ दास को राज्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। आज राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आलप्पन बंदोपाध्याय को राज्य का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। वे अत्रि भट्टाचार्य का स्थान लेंगे, जिन्हें चुनाव आयोग ने हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान हटा दिया था। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO सतह से हवा में मार करने वाली आकाश 1S प्रक्षेपास्त्र का आज सफल परीक्षण किया। आकाश 1S इसी श्रेणी के प्रक्षेपास्त्र का नया संस्करण है जो एक स्वदेशी खोजी यंत्र से लैस है। ये प्रक्षेपास्त्र दुश्मन के लड़ाकू विमानों और ड्रोन को प्रभावी ढंग से मार गिराने में सक्षम है। महाराष्ट्र में एक नक्सली ने आज गोंदिया पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 27 वर्षीय नक्सली जगदीश ने 3 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी। पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के नक्सलियों के खिलाफ छापेमारी अभियान के कारण जगदीश ने आत्मसमर्पण किया। महाराष्ट्र सरकार ने 2005 में नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए चलाए गए अभियान के अंतर्गत गोंदिया जिले में अब तक 19 नक्सलियों ने समर्पण किया है। उच्चतम न्यायालय ने वस्तु और सेवा कर GST की चोरी करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने के तेलंगाना उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के 18 अप्रैल के फैसले में हस्तक्षेप करने का न्यायालय का कोई इरादा नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल के वर्ष 2018-19 के मुनाफे में भारी वृद्धि हुई है। कंपनी ने इस दौरान 60% का लाभांश देने की सिफारिश की है। तमिलनाडु के त्रिची में कंपनी की विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने इस वर्ष भारतीय रेलवे के लिए पहली बार 6000 हॉर्स पावर के एक विद्युत इंजन का निर्माण किया है। कंपनी को पहली बार 440 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग के विद्युतीकरण का प्रस्ताव भी मिला है। और अब व्यापार जगत की खबरों के साथ हैं विशाल शर्मा। प्रमुख घरेलू शेयर बाजार आज दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद अब तक के रिकॉर्ड उच्च समापन स्तर पर बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 249 अंक के उछाल के साथ 39,683 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 81 अंक की वृद्धि दर्ज करता हुआ 11,900 के स्तर को पार कर गया और ये 11,925 पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 69 रुपए 51 पैसे के स्तर पर बना रहा। तेलंगाना के उत्तरी और पूर्वी जिलों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने 31 मई तक ऐसी ही स्थिति बनी रहने की चेतावनी दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लोगों को तेज धूप में नहीं निकलने और गर्मी से बचाव के आवश्यक और एहतियाती उपाय करने की सलाह दी गई है। तेलंगाना के विभिन्न हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। हैदराबाद में मौसम विभाग के निदेशक वाई रेड्डी ने बताया है कि इस महीने में लगातार 17 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रही। राज्य में एंडपल्ली, राजारामपल्ली और जगतयाल जिले के कोलवाई में आज अधिकतम तापमान 47.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पेदपल्ली जिले के रामगुंडम में भी अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जगतयाल जिले के रयाली और जयशंकर भोपालपल्ली के मेदाराम में पारा 47.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ निखिल कुमार। भारत के युवा निशानेबाज सौरभ चौधरी ने जर्मनी के म्यूनिख में निशानेबाजी विश्व कप में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। सौरभ ने फाइनल में 246.3 का स्कोर बनाया और नई दिल्ली विश्व कप में बनाए गए 245 अंक के अपने ही रिकॉर्ड में सुधार किया। चौधरी पहले ही टोक्यो ओलंपिक के लिए कोटा हासिल कर चुके हैं। भारत का म्यूनिख विश्व कप में ये दूसरा स्वर्ण पदक है। राष्ट्र आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी 55वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक ट्वीट में पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार और पार्टी के बीच उचित तालमेल को महत्वपूर्ण बताया। कहा, कार्य और कार्यकर्ता मिलकर आश्चर्यजनक नतीजे दे सकते हैं। भारत ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बिम्स्टेक देशों के नेताओं को आमंत्रित किया है। सिक्किम क्रांति मोर्चा अध्यक्ष प्रेम सिंह गोले ने 11 कैबिनेट मंत्रियों के साथ सिक्किम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पेमा खांडू दूसरी बार अरुणाचल
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने जमीन से हवा में मार करने वाली आकाश 1S रक्षा मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। Good evening. This is All India Radio and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi stresses on importance of perfect synergy between government and party, says work and workers together can create wonders. India invites leaders of BIMSTEC countries for swearing-in ceremony of Prime Minister Modi on Thursday. Sikkim Krantikari Morcha President P.S. Gole sworn in as Chief Minister along with 11 cabinet ministers. Pema Khandu to take oath as Chief Minister of Arunachal Pradesh for the second term on Wednesday. DRDO successfully test fires Akash 1S surface-to-air defence missile system. And in shooting, India's Saurabh Chaudhary betters own world record to win gold medal in 10-meter air pistol at ISSF World Cup in Munich. Prime Minister Narendra Modi today stressed on the importance of perfect synergy between the government and the party and said work and workers together can create wonders. Mr. Modi was addressing the party cadres at Varanasi in Uttar Pradesh on his Thanksgiving visit to his parliamentary constituency. सरकार और संगठन दोनों के बीच में सिनर्जी। सरकार नीति बनाती है, नीति पर चलती है। संगठन रणनीति बनाता है। नीति और रणनीति इसकी सिनर्जी सरकार और संगठन के काम की सिनर्जी का एक प्रतिबिंब होती है और जिस प्रतिबिंब का आज हम सफल उसका लाभ देश को मिल रहा है। Thanking the people of the city for voting him into the Lok Sabha for a second term, Mr. Modi said the nation has elected him as the Prime Minister, but for people he will remain a worker. Mr. Modi paid tributes to the BJP workers who laid down their lives for the party's cause. कश्मीर में हमारे लोगों ने जान की बाजी लगाई है, केरल में है, हमें मौत के घाट उतार दिया जाता। शायद हिंदुस्तान में कोई एक राजनीतिक दल इतनी व्यापक प्रकार से हिंसा का शिकार हुआ है, उसी का परिणाम है कि हिंसा को एक प्रकार से मान्यता दी गई है। ये हमारे सामने बहुत बड़ा संकट है। The Prime Minister said his government will ensure Sabka Saath, Sabka Vikas. He said there is no alternative to transparency and hard work. Mr. Modi said the political analysts will have to accept that beyond poll arithmetic there is chemistry. The Prime Minister said he was grateful to the opponents who had fought against him. Earlier in the day, the Prime Minister offered prayers at the Kashi Vishwanath temple. Mr. Modi was accompanied by BJP President Amit Shah and Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath. India has invited the leaders of the BIMSTEC member states for the swearing-in ceremony of Prime Minister Narendra Modi. In response to a media query, spokesperson of External Affairs Ministry Ravish Kumar said in New Delhi that this is in line with the government's focus on its neighbourhood first policy. President of the Kyrgyz Republic, who is the current chair of the Shanghai Cooperation Organization, and the Prime Minister of Mauritius, who was the chief guest at this year's Pravasi Bharatiya Divas, have also been invited. Prime Minister Modi will take oath for the second term on Thursday evening. President Ramnath Kovind will administer the oath of office in secrecy to Mr. Modi and other members of the Union Council of Ministers at a function in Rashtrapati Bhavan. Sikkim Krantikari Morcha SKM President P.S. Gole today took over as the new Chief Minister of Sikkim. Governor Ganga Prasad administered the oath of office and secrecy to Mr. Gole at Paljor Stadium in Gangtok amidst a huge gathering of people. Along with Mr. Gole, 11 cabinet ministers were also administered the oath. The portfolios will be allotted later. Later talking to media persons, Mr. Gole said his government will lead the state in a democratic manner. He said the main agenda of the government is to focus on development, peace and stability in the state.
SKM won 17 of the 32 assembly seats in the state in the recently held assembly polls. Sikkim Democratic Front, which had ruled the state for 25 years, won 15 seats. BJP leader Pema Khandu will be sworn in as the Chief Minister of Arunachal Pradesh for the second term on Wednesday, after emerging as the single largest party in the state by winning 41 of the total 60 seats in the House. BJP held its legislature party meeting in Itanagar today. We have a report. Pema Khandu will be sworn in as the Chief Minister of Arunachal Pradesh for the second term on Wednesday. BJP in its legislature party meeting today unanimously elected Mr. Khandu as the leader of its legislature party. The meeting was also attended by senior BJP leader and party central observer JP Nadda. Later, Mr. Khandu made Governor Dr. B.D. Misra and stake claim to form government. It is expected that his council of ministers will also take oath on the same day. Rakesh Dole, Air News, Itanagar. The Congress has said various speculations and rumours in a section of the media regarding deliberations of its working committee, CWC, during the recently held meeting is uncalled for and unwarranted. Party spokesperson Randeep Singh Surjewala requested the media not to fall into the trap of conjectures or speculations and await the calibrated efforts by the party towards the future course of action. He said his party expects them to respect the sanctity of a closed-door meeting of the CWC. On the 25th of this month, the CWC had held a meeting to deliberate on the reasons for the party's debacle in the Lok Sabha elections. Delhi Congress Unit President Sheila Dikshit has constituted a 5-member committee to find the reasons for the party's defeat on all the 7 seats in Delhi in the recent Lok Sabha polls. She has asked the panel to submit its report within 10 days. Former Delhi ministers A.K. Walia, Yoganand Shastri and Congress spokesperson Pawan Khera are among the members of the committee. Punjab Chief Minister Captain Amrinder Singh has termed Sunil Jakhar's resignation from the post of State Congress Chief as totally unnecessary. The President of Punjab Pradesh Congress Committee had resigned from the post last week, taking moral responsibility after his defeat from Gurdaspur Lok Sabha seat to actor, politician and BJP candidate Sunny Deol. Assam State Congress President Ripun Bora offered to resign from his post following the party's dismal performance in the Lok Sabha polls in the state. He said though the party got 3 seats in Assam, he is not satisfied with the outcome. The BJP has decided to field Kamakhya Prasad Tasa for one of the Rajya Sabha seats in Assam. His name was decided at the BJP's legislative party meet in Guwahati this evening. Polls will be held on the 7th of next month for 2 seats of the upper house of parliament. BJP's ally Ahom Gana Parishad will field former Union Minister Birendra Prasad Baisya on another seat. Tomorrow is the last date for filing nomination papers. This is All India Radio giving you the news. For quick news updates, follow us on Twitter at AIR News Alerts. Defence Research and Development Organisation DRDO today successfully test-fired the Akash 1S surface-to-air defence missile system. Akash 1S is a new version of the missile which is fitted with an indigenous seeker. In the last 2 days, this is the second successful test of the missile by the DRDO. The Akash 1S is capable of striking down enemy fighter jets and drones very effectively. The government has constituted the Unlawful Activities Prevention Tribunal to adjudicate whether or not there is sufficient cause for declaring the Liberation Tigers of Tamil Eelam LTTE as an unlawful association. The tribunal is comprised of sitting judge of Delhi High Court, Justice Sangeeta Dhingra Sehgal. Earlier, the Home Ministry had issued a notification extending the ban on LTTE in India for a further period of 5 years. LTTE was banned in India after the assassination of former Prime Minister Rajiv Gandhi in 1991. In Uttar Pradesh, Amethi police arrested 3 persons today in connection with the murder of BJP leader Surendra Singh. DGP of the state, O.P. Singh, told media persons in Lucknow that enmity related to local politics was the reason behind the murder. Surendra Singh was a close aide of MP Smriti Irani. 2 more persons involved in the murder are absconding and police is conducting raids to nab them.
Several parts of the country are experiencing intense heat wave. In Rajasthan, normal life has been affected due to severe heat at most places in the state. In Maharashtra, heat wave conditions are likely to prevail in Vidarbha and Marathwada areas, with temperatures ranging from 44 to 46 degrees Celsius. In Telangana, the Met Department has warned that heat wave conditions will continue till the 31st of this month. Our correspondent reports that people have been advised not to expose themselves to direct sunlight and take necessary precautions to avoid heat stroke. Various parts of Telangana have been reeling under heat wave conditions for 23 days so far during the current season. Hyderabad Weather Station Director Y.K. Reddy said heat wave conditions prevailed in the state for 6 days during the month of April and 17 days in the current month. Meanwhile, Telangana State Development and Planning Society data revealed that Endapalli Rajarampalli and Kalwai of Jagatyal district recorded the highest maximum temperature of 47.9 degrees Celsius today. Lakshmi, AR News, Hyderabad. 4 new Delhi High Court judges, including a woman judge, were sworn in today, taking the working strength of the court to 40, still way short of the approved number. Justices Talwant Singh, Rajneesh Bhatnagar, Asha Menon and Brijesh Sethi were administered the oath by Delhi High Court Chief Justice Rajendra Menon. The Delhi High Court has an approved strength of 60 and faces a shortage of 20 judges. The 4 judges were appointed by President Ramnath Kovind after their names were approved by the government. The new appointees were judicial officers in the Delhi district courts. The nation paid homage to its first Prime Minister of the country, Pandit Jawaharlal Nehru, on his 55th death anniversary today. Former Prime Minister Dr. Manmohan Singh, UPA Chairperson Sonia Gandhi and Congress President Rahul Gandhi paid tributes to Pandit Nehru at his memorial Shantivan in the national capital. Vice President M. Venkaiah Naidu and Prime Minister Narendra Modi have paid tributes to Pandit Nehru on his death anniversary. Indian Air Force Air Chief Marshal B.S. Dhanoa led a 4-aircraft MiG-21 missing man formation flypast today at Bhisiana Air Force Station at Bhatinda in Punjab to honour the valour and supreme sacrifice of the men killed in action in Operation Safed Sagar during the Kargil War. An official release said the missing man formation is an aerial salute accorded to honour the fallen comrades in arms. It was on this day in 1999 that squadron leader Ajay Ahuja laid down his life during the Kargil conflict. Domestic indices BSE, Sensex and NSE Nifty today again closed at record highs as investors continued to cheer the decisive mandate for the BJP government in the national elections. A report. The Sensex at the Bombay Stock Exchange ended 249 points, so 0.63% up at 39,683. The broader Nifty 50 gained 81 points, so 0.68% to cross the 11,900 mark to settle at 11,925. The rupee at the forex market today closed with a marginal rise of 2 paise at 69 rupees and 51 paise against the US dollar. And Brent crude prices were trading at 69 US dollars and 10 cents a barrel. With Sanjeev Kumar Singh, V. Ravi Kumar for AIR News. At ISSF Shooting World Cup in Munich, Germany, India's Saurabh Chaudhary has won the gold medal in the 10-meter air pistol event, beating his own world record. The 17-year-old Chaudhary scored 246.3, bettering his previous best of 245 points that was set in New Delhi World Cup shooting in February this year. Chaudhary has already secured a berth for the Tokyo Olympics. This is India's second gold in the championship. Yesterday, Apurvi Chandela had won a gold in the women's 10 meters air rifle event. In French Open tennis, defending champion in second seed Rafael Nadal advanced to the second round of men's singles. The 11-time French Open champion defeated Y. Hanfmann. In the first upset of the day, 12th seed Daniil Medvedev was beaten by unseeded P. Herbert. Top seed Novak Djokovic will begin his campaign later tonight. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi stresses on importance of perfect synergy between government and party, says work and workers together can create wonders. India invites leaders of BIMSTEC countries for swearing-in ceremony of Prime Minister Modi on Thursday.
Sikkim Krantikari Morcha President PS Gole sworn in as Chief Minister along with 11 cabinet ministers. Pema Khandu to take oath as Chief Minister of Arunachal Pradesh for the second term on Wednesday. DRDO successfully test fires Akash-1 air surface-to-air defense missile system, and in shooting, India's Saurabh Chaudhary bet his own world record to win gold medal in 10-meter air pistol at ISSF World Cup in Munich. And that is all in the news at 9. Good night. सूरज की खिलती पहली किरण के साथ आकाशवाणी अपने एक और नए अंदाज में दे रही है आवाज। DTH यानी डायरेक्ट टू होम सेवा पर आप सभी का स्वागत है। गाता एक राम भक्ति संगीत, प्रादेशिक संगीत, विविध भारती FM के कार्यक्रम, प्रादेशिक समाचार और देश विदेश के समाचारों का भरपूर आनंद DTH सेवा के संग। आज की ताजा देश के किसी भी कोने में रहते हो आप, अपने ही राज्य से उस कोने में भी DTH के माध्यम से जुड़ सकते हैं आप। बस DTH सेवा का उठाए लाभ। आपकी हर सांस के साथ साथ DTH सेवा 24 घंटे रहे आपके पास। डिजिटल क्वालिटी का ऐसा सुंदर प्रसारण और कहां, DTH सेवा है जहां। This is All India Radio. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on developments in the subcontinent, initiatives of India. The participants are Shashi Uban Tripathi, former diplomat, and Simran Sodhi, journalist. Today we are discussing the statement by the Prime Minister-elect Narendra Modi, where the Prime Minister has emphasized that trust, terror-free atmosphere is vital for peace. The Prime Minister was responding to the call made by the Pakistan Prime Minister Imran Khan to Prime Minister-elect Modi, congratulating him and his party for the spectacular victory they've had in the elections recently held in India. Ambassador Tripathi, how do you think that this can be given a new spin or a new beginning, since we are now going to have a new term with Prime Minister Modi? But do you feel that this is a message that can have a new beginning, basically? Simran, let me start by saying that this landslide victory that the party has won and the PM himself has won augurs well for foreign policy in general and for our policy towards Pakistan in particular. That's because, when elections of this magnitude take place in a democratic country like India, one of the largest democracies in the world, then all the countries are looking very carefully at you and they note every little thing. So the fact that your leader has come with such a landslide majority will mean that the world leaders are going to look at him with renewed respect, and they will listen to him because he is the voice of the majority of Indian population, which is 1 billion really. Now, Pakistan, our neighbor to the west, and their Prime Minister Imran Khan's phone call. He did the right thing. He did what was politically correct. There's a new election in India, the largest country of the subcontinent, their neighbor, and the leader who has come back. So he sent a message of congratulations. He has made these favorable noises before also. So we have to wait and see how sincere these thoughts are and these words are. As you said, he mentioned that he wants to work with India and in the interests of peace, progress and prosperity. These are the three words that he used. And our Prime Minister gave a very straightforward answer. It was a realistic answer. It was not cantankerous. It was not impolite, but it was very straight and it was very clear. And that the operative word here is peace. If you have peace, you will have progress. If you have progress, you will have prosperity. But all this is possible only when we can build trust between our two countries and we can root out terrorism by its roots, and this can only happen if Pakistan puts its mind to it. This is only possible if Pakistan roots out terror. But as you mentioned, that this is a stance that Pakistan has taken time and again. They've said they're serious about terrorism, but then we see one strike after the other happening. The phone call between Prime Minister Modi and the Pak Prime Minister is also the first conversation between the two leaders after the airstrikes in Balakot and what we saw in Pulwama in February. And it's significant because this is a long gap after which the two leaders have talked, and this
could be a renewal of things, or it could go back to square one, where Pakistan continues to pursue terror as a state policy. Do you feel that for Pakistan it is easy, or it is an option to now discontinue using terror as a state policy, or do you feel that given the circumstances in Jammu Kashmir, given Pakistan's own internal dynamics, its army and then the internal domestic politics, it will really be difficult for Pakistan to switch off terror as a state policy? For Pakistan, certainly it's a big opportunity to turn the leaf if they want to. But as you said, it depends on all these conditions. Now look at the state in which Pakistan is today. Economically, it's a basket case. It's in shambles. They are virtually bankrupt. They've gone around with a begging bowl asking for loans. China has helped them somewhat. The International Monetary Fund recently gave them a loan, but the loan comes with a whole lot of conditions which Pakistan will have to fulfill. And more important than all this is the fact that today Pakistan is paying more in interest than it is on the capital, which they have borrowed from the rest of the world. So their situation economically is very, very bad. That's one thing. Secondly, the whole world has become wise to the fact that Pakistan is today the hub of terrorism, that all these terror groups and their leaders, the terrorists, some of them have been banned by international organizations and different countries. Some have reward on their head, like Hafiz Saeed, for instance, has a reward of $10 million on his head. But they are roaming around freely in that country and inciting people to jihad and giving all kinds of incendiary messages. So if Pakistan really means what it says, it will have to control this. And its own position is so bad today, as I said, economically and politically on the global scene, that even China will not be able to help them beyond a point. And you've seen what happened during the branding of Masood Azhar in the Security Council. Even China did not anymore stand in the way. They had tried to protect him 4 times before. So this is a golden opportunity for Pakistan, but will they? That is the question. If we look at the public sentiment also today, there seems to be anger, there seems to be resentment at what Pakistan has done and what Pakistan continues to do. And we see that this is one of the strengths of Prime Minister Modi and his party, that they have taken a strong stand when it comes to national security and terror-related activities. But how much does public sentiment then finally play when one is making policy? You see, that is where the sense of diplomacy of our Prime Minister and his officers and his ministers will come into play, because India is no longer a weakling. You know, we have to remember that today India is in a position of strength, not only in the neighborhood, not only in Asia, but on the world stage. So once you are a major rising power, then you have a certain responsibility. And that responsibility is to talk straight and to make your intentions clear, so that the world knows how credible you are. Our credibility has never been questioned, but now more than ever before, we have to be very clear about our policies. You asked how far does public opinion mold foreign policy. I think it does to a very large extent. But it depends again on leaders, how they present that policy to the public at large. At this moment, as you rightly mentioned, tempers are very high vis-a-vis Pakistan because of what happened in Pulwama and what is continuing across the border, or what is happening in Punjab or in Jammu and Kashmir. And you had the Chief Minister Amrinder Singh saying as much. So it will depend on whether Pakistan mends its ways. If it takes certain steps in order to ease the situation, then the public opinion in India will also become a little more moderate. Mr. Tripathi, we also see that next month in June, that is the time likely when Prime Minister Modi and the Pak Prime Minister are likely to meet. But there's also been a certain amount of buzz that the Prime Minister might reach out to foreign leaders like he did the last time and invite them for a swearing-in ceremony. But when we see the readouts that we have from both India and Pakistan regarding the telephone call between the two leaders, one at this point does not get an indication to that. Do you feel that India at this point should be reaching out to Pakistan, or do you feel it would be maybe a little more wise for India to wait
let the meeting happen in June. Already you mentioned that our foreign ministers met on the sidelines of the SCO foreign ministers meeting recently, and the two prime ministers will be meeting in June on the sidelines of the SCO summit in Kyrgyzstan. So I think it's best to wait a little bit and not jump the queue. Look, when Kartarpur corridor opened up, there was so much euphoria, and this happens between the two countries. One good step forward and there's big euphoria, and then we are surprised or shocked by the next step. So we need to take things a little realistically. Now, as far as Pakistan is concerned, they have always been harping on talks. This is only for a photo op, to show the world that things are getting back to normal, so that the focus of the world is removed from terror. And that is something we cannot allow. After years, we've got this sanction on Masood Azhar, and that's because the rest of the world is now very much aware of what is happening on the terrorist front, because they've all been facing terrorism. Now, let's take IS, for instance. The Islamic State has its tentacles in South Asia also. We've seen what happened in Sri Lanka. Recently there have been bomb blasts in Kathmandu. We don't know who or what was responsible. But the fact is that this terror organization also, which has very strong links with Pakistan, but may not be centered there, but it is working globally, has its footprints in South Asia. So, these are factors that we cannot ignore. So we will have to play a little cool and play wait and see. Ambassador Tripathi, we also see that the Prime Minister, when talking to the Pakistan Prime Minister Imran Khan, told him very clearly that creating trust and an environment free of violence and terror were essential for fostering cooperation, peace, progress and prosperity in our region. So when we talk of the region and the safety and the security and peace in the region, do you feel that there has to be united effort, and India has been pushing that for at least the last 5 years, and the PM seems to want to continue that Pakistan has to come into the picture? It has to realize that till Pakistan takes a step back on terror, the region will not be at peace, and that's an emphasis in his message today. And do you feel that when, like we saw, SAARC has not been able to go forward again because of Pakistan? So the South Asian region, or the SAARC region, it suffers primarily because of one member, Pakistan. You see, Pakistan has to realize that it is not just the region that is suffering, its own country. Pakistan is suffering the most. So I don't know why that realization does not dawn upon them. There is so much to be gained by cooperation with this region, and especially with India, rather than confrontation and violence. I really don't understand that. But they have their own agenda. By now, we all know what that agenda is. The thing about Pakistan is, I mentioned that they harp on wanting to talk to India. But how can you talk to someone who has a gun to your head? So even for talks to take place, there has to be a certain environment that has to be created. And the Prime Minister was absolutely right in saying that there has to be trust, which is the bedrock of any relationship, frankly. And there has to be counter-terrorism measures. So this is important. The Prime Minister will now start a second term, and he has a huge mandate, and this would see a continuation, as you said, of a lot of foreign policy issues. Do you feel that on Pakistan we can expect, one, a continuation of the old policy? B, would you expect India maybe to take a few chances to try out to see if there is a way in which terror can also be contained? A Prime Minister who has come with such a huge mandate has the leeway. He can, if he wants, and I think our Prime Minister means well. He can take certain steps, and the people will go with him. This has to be explained to the people, but they will go with him. So it's good to have a strong leader. And if you remember, that's exactly what Imran Khan said when the elections were taking place, or the campaigning was taking place. And he said he felt that if Mr. Modi came back to power, then there are better chances of peace between India and Pakistan. That may have a little germ of truth in it, because Mr. Modi is a strong leader. Going by the speeches he has already made after his victory, he's behaved in a very statesman-like manner, and it's quite possible that he would want to take a step forward. The best step forward would be the backtrack talks, not a structured dialogue, because that cannot happen, but some kind of back channel
talk between different people, like the two NSAs, maybe the foreign ministers already have met, and maybe a hotline, maybe a conversation between the two prime ministers once in a while. You see, that might help break the ice, and maybe better sense will dawn on our neighbor. Thank you. Thank you. You are listening to a discussion on developments in the subcontinent, initiatives of India. The participants were Sashi Uban Tripathi, former diplomat, and Simran Sodhi, journalist. This program was produced and presented by the News Services Division of All India Radio. This program is also available on our website newsonair.nic.in. You may email your opinion about this program at airnsdtalks@gmail.com. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio. This is All India Radio. In a special bilingual program, now we bring you a discussion on overall analysis of post-poll strategy of BJP. The participants are political analysts Shekhar Iyer and Kumar Rakesh. Vinay Kumar, journalist, initiates and moderates the discussion. After an impressive show in 2019 Lok Sabha elections, the BJP is all set to begin second innings of Prime Minister Narendra Modi as the captain of the ship. Prime Minister Narendra Modi, in fact, will be the first non-Congress Prime Minister to serve the country for a regular 5-year term for a second time consecutively. And this is also a time that after winning elections so handsomely with crossing the 300 magic figure and obtaining majority on its own, the BJP seems all set to provide a new paradigm in governing the country as vast and as diverse as India. Shekhar, if we see for some indications that what will be the principles governing India by the BJP-led government of National Democratic Alliance, of which Prime Minister Modi is the leader, he himself in his two landmark speeches, one the victory speech at BJP headquarters, another one his address to the NDA parliamentary party meeting in Central Hall of Parliament, he has provided some indications that inclusiveness, the first action of Prime Minister was before the Constitution of India, and at party headquarters also he said that Constitution is supreme for him. A line which has been much appreciated widely on social media and elsewhere in media also is, "Ab hamare koi paraya nahi ho sakta." This is what Prime Minister Modi said. So what are the takeaways from Prime Minister's these two speeches which you think provide a strategy, provide an indication of strategy through which BJP will unveil its second innings at center? This mandate of 2019 has been a very unusual mandate. Such an overwhelming vote for Prime Minister Modi has in fact deeply moved him. So therefore, it is first response which he gave when he addressed the party workers in the BJP Karyalaya in Delhi, where he said, look, we must understand and appreciate this mandate. And he said, this is an election which was not fought by us. This is not an election in which Modi went to, get votes. This is an election of the people. First time people have voted not on the basis of caste, not on the basis of community, but on the basis of making India strong, prosperous, all-inclusive India. Therefore, the Prime Minister reminded his partymen and others and general polity that this mandate requires that we fully work to the fulfillment of the aspirations of the people. This is the voice of the aspirational India. Therefore, we saw him particularly mention that normally an election of this sort, given the kind of aggressive campaign, there is a loser and there is a victor. But Prime Minister feels this election has actually united India. This is one election. People have not been divided on the basis of caste or anything. Rather, they have come together and to choose government that they believe will take forward their aspiration, improve their quality of life, and create a situation and an environment where their fullest potential can be realized. Every individual's. Therefore, the Prime Minister said, we must understand people have reposed faith in us. That is not for our sake. They have done it because they feel we are the ones who can carry out their dreams. So therefore, great mandate requires us great responsibility. This is the underlying message of the Prime Minister to his partymen, to the newly elected MPs,
look, we must appreciate the enormity of this mandate. If you understand the enormity of mandate, then you will become very responsible to your duties and that which is required of you. In that context, when he said this vote is not a divider, it is there he said, look, we will have to work for people who voted for us and people who did not vote for us. हमारी घोर जिन्होंने कभी हमें स्वीकारा नहीं, उनके लिए भी हमें काम करना है. Because this is also a message to some leaders who are saying, I will work for people who vote for me and all that. This is a very strong message. In that context, he mentioned, हमारा कोई पराया नहीं है. There is nobody who is an outsider for us, who is an alien for us. I think that's a very strong message. And in that context, he also mentioned this politics, which has been followed by a narrative where people are saying, by this is majoritarianism, minorityism. He has come out against that. He has said, look, the time has come. Even the minorities should not be misguided anymore. Some parties have tried to misguide the opposition by invoking fear in them that बीजेपी आने से ये होगा, मोदी जी आने से ये होगा. ये जो डर का माहौल में एक समुदाय को भयभीत करके रखना, प्रधानमंत्री बोले कि अब राजनीति ऐसी नहीं होनी चाहिए. कारण क्या है कि ये जो 5 साल है, पहले 5 साल हमने गरीब के लिए काम किया, अब इस 5 साल गरीब ने हमें चुना है और गरीबी का कोई जात नहीं है, गरीब का कोई धर्म नहीं है, तो हमें काम करना है. And since you have to work, you must have a unity of purpose. You must have a tenacity of objective. So I think it's a very, very, I would say, a kind of an appeal that takes care of all the misapprehensions that comes, when a party or a prime minister gets a huge mandate. Naturally, the next logical question which comes to mind is that the party apparatus as well as the government administrative machinery should take the Prime Minister's words seriously and they should walk the talk, as we say. कुमार राकेश, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो प्रधानमंत्री ने अपने 2 भाषण दिए जो जिनमें एक इंडिकेशन मिलता है कि अब अगले दूसरे टर्म में क्या करने वाली है सरकार, जैसे शेखर बता रहे थे कि इस बार परफॉर्मेंस, गरीबों के लिए काम करने, ऐसे बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स जो मोदी जी के दिल को बहुत प्रिय थे. और आज भी वाराणसी में भी प्रधानमंत्री बोले हैं, थैंक्स गिविंग जो उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया, जहां वहां पर बोला कि ट्विन चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी एंड वायलेंस, ये था. जबकि हमारी पार्टी को इस तरह से लोग देखते थे बीजेपी को कि पॉलिटिकली अनटचेबल समझा जाता था. और उन्होंने नाम भी लिया केरल, बंगाल और कश्मीर, जहां पे बीजेपी कार्यकर्ताओं के अगेंस्ट वायलेंस हुआ. प्रधानमंत्री ने वाराणसी में कहा कि आज हमारी पार्टी ट्रूली डेमोक्रेटिक पार्टी. तो अब अगर हम ये थोड़ी से एनालिसिस करने की अगर प्रयास करें कि जो प्रधानमंत्री ने अब तक जो कहा है, इलेक्शन जीतने के बाद इतनी, जैसे शेखर बता रहे थे, इतने भारी मार्जिन से, इतने भारी बहुमत से कि किसी को विश्वास नहीं था कि 300 का आंकड़ा पार करेगी, मगर प्रधानमंत्री बार बार कह रहे थे. आज भी वाराणसी में कहा है कि अरिथमेटिक नहीं, ये केमिस्ट्री की बात है कि कहाँ पर क्या चीज क्लिक की है लोगों में, कितने भारी बहुमत के साथ जो बीजेपी को जिताया है. तो एक नई जिम्मेदारी बनती है बीजेपी के कंधों पर और गवर्नमेंट के कंधों पर कि केंद्र में सरकार उन सारे तबकों के लिए काम करे, सब लोग समझे कि हमारी अपनी सरकार है. तो आपको क्या लगता है आने वाले जो सेकंड टर्म होगा उसमें प्रधानमंत्री का ध्यान, प्रधानमंत्री का जोर किन एरियाज के ऊपर ज्यादा रहने वाला है? प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी बात कही कि जीतने के बाद आदमी का जो स्तर है, उनकी सोच है, वो व्यापक हो जाती है, जो हमारी भारतीय संस्कृति का अंग है कि जब हम पेड़ लग जाता है फलों से तो झुक जाता है. प्रकृति का भी नियम है, भारतीय संस्कृति में उस बात कही गई. तो प्रधानमंत्री उस बात को फॉलो करते हुए न्यू इंडिया की परिकल्पना है, उसके ही सारे तत्व उन्होंने बताए कि जैसे कि वीआईपी कल्चर से मुक्ति, कि वीआईपी कल्चर से आप मुक्त हो जाएं, कि आप काम करें, ज्यादा पब्लिसिटी में ना जाएं, पब्लिसिटी से कंफ्यूजन पैदा होता है, 10 तरह की बातें आती हैं. फिर उन्होंने एक बात कही कि जाति की बात. उन्होंने ये नहीं कहा कि देश में 2 तरह की जाति है, गरीब को उन्होंने एक जाति बताया. जाति के नैरेटिव से आपको बाहर आना पड़ेगा, जो क्षेत्रवाद है उससे आपको बाहर आना पड़ेगा. अमीर नहीं बोला, मतलब गरीब एक जाति, इसे हमें मिटाना है. ये हमारा एक कर्ज है देश में. साथ साथ जो सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, कुछ खबरें आ रही हैं, पहले भी आती रही हैं माइनॉरिटी को लेकर के, वो एक चिंता का कारण लगता है कि प्रधानमंत्री के मन में वो चिंता है कि यदि ऐसी चीजें हैं तो इसको हम कैसे मुख्य धारा में ला करके उसको एक ये बना सकते हैं. उनके माइंड में है कहीं न कहीं से. आई एम थिंकिंग व्हाट ही वाज थिंकिंग. इफ यू रिकॉल द 1991 90s में दे एडवोकेट फॉर द एकता यात्रा. तो जो एकता यात्रा है वो उनके जीवन का हिस्सा है कि देश यूनाइट कैसे होगा. तब जाकर के लाल चौक की बात आई, जहाँ झंडा फहराया विद मुरली मनोहर जोशी. और अभी जीतने के बाद जो सबसे पहला काम उन्होंने किया कि दोनों जो बुजुर्ग नेता मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी के पैर छुए.
इसके अलावा जो बात उन्होंने कही शासन सुशासन की जो बात है, जो ब्यूरोक्रेसी की बात है, तो उस पर भी कैसे हम डिलीवरी करें उस पर फोकस करने की बात है। पहले भी फोकस करते रहे हैं, जितनी योजनाएं चली उन योजनाओं में कितना पहुंचा कितना नहीं पहुंचा। तो जो उनका पार्टी है और संगठन में जैसे अमित शाह हैं और दोनों ने मिलकर के जो स्थितियां बनाई, तो अपने आप में एक ऐसा उदाहरण बना कि 300 उन्होंने क्लेम किया, 303 आया, और इसलिए जिम्मेवारी उनकी ज्यादा बढ़ गई और सबको साथ भी लेना है। किसी का हमको फिक्र नहीं है, रामविलास पासवान की बात हो या शिवसेना की बात हो या छोटे छोटे जो भी दल हैं, उनको कैसे साथ लेके चलना है। दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्री, इम्पोर्टेंट फॉर हिम। व्हाट एवर ही इज थिंकिंग, व्हाट इज हिज इन माइंड, यूनाइटेड इंडिया के साथ साथ न्यू इंडिया। Shikhar, as Kumar was saying, New India के बारे में प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा, and he has also, in his victory speech at BJP headquarters, he mentioned two milestones. One is the ongoing celebrations of Mahatma Gandhi's 150th birth anniversary, and then he said in 2022 we'll be celebrating, 75th anniversary of India's independence. So he's very keen to set some kind of goalpost, some kind of target for that year 2022, that India should join the ranks of developed nations and it should march ahead on the path of development. And he has always said that development or vikas is the main motto of BJP and his government. And another indication which Kumar Rakesh was saying, that all NDA allies, although BJP has got 303 on its own, but all NDA allies will be accommodated in the union cabinet, giving a message of a united country where allies have not been shown the door, that the party has won the majority on itself. So, but taking all NDA leaders along. And it was at the time of filing nomination also, he touched feet of Prakash Singh Badal. And after NDA's parliamentary board meeting also, Prakash Singh Badal, who is by far the senior most former chief minister of Punjab, and his stature, he said that he has worked with Mr. Modi for the past 20 years, and in all these 20 years, he has seen Mr. Modi working for 18 hours a day. So his tremendous energy, Mr. Badal said, is no mistakes about it. He is go-getter who will get things done, and he has not taken a single leave for the past 2 decades. So Mr. Modi also said that the NDA must walk shoulder to shoulder. He said that, but I am always happy to be one who takes the blame if anything goes wrong. So my feeling is that you have seen BJP and Mr. Modi working at close quarters. We'll see a new version, Narendra Modi 2.0, second edition of Mr. Modi in these 5 years. Who will be more statesman-like? He has indicated in his first tweet, it's victory for India, inclusive India. बिल्कुल आपने सही कहा विनय जी कि प्रधानमंत्री की सोच ही अभी इस बार थोड़ा अलग है। बार बार उन्होंने एनडीए की जिक्र की, जब उन्होंने एनडीए एमपीज को संबोधित किए सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में। He wants to convey the message that BJP may have enough numbers, may have a majority on its own, but the way forward is to go for an alliance and a coalition of minds, and that is possible as he will be the leader of the NDA, and he wants all allies to feel involved in this great exercise he feels that has started with the second term. Therefore, he kept on saying, you see, despite I am calling for reconciliation, I am calling for dialogue, I am calling for samvad, after we have secured more than 300. It is not out of weakness, from strength I am saying. And also I think he has drawn from his experience with this allies, some of the allies like Shiv Sena, who were very recalcitrant, always they were not happy with BJP, BJP was not happy with them. So he wants all these things to be things of the past, because any discordant note in the course of conduct of governance will always send mixed signals. It will send what is this, such a huge mandate and why there is bickering. He doesn't want such bickerings to be out in the open. That is why this time he has added a new term, which is Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas. That is, you earn the trust and confidence of everyone. That is the trust here. One more thing, when he went to Ahmedabad, where he again addressed BJP Karyakarte, he brought 2 things there. He said this huge mandate that we have got, it has brought us to the focus, our attention on the problems faced by common citizen. And that we are going to do on the basis of Jan Bhagidari. He wants participation of all people, all sections of society. And that is possible only if we do Jan Chetana. That is, we raise the awareness of the common people, awareness of all sections. Jan Bhagidari and Jan Chetana
will be a kind of, which I see, a two-pronged approach of this government. And that is the thrust he wants to give. One is Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas. That the emphasis on trust is also a very, very new priority for Prime Minister. And the other thing is that this is vote for the poor, to work for the poor. And you will recall, Vinayji, that when he addressed the BJP workers on the first day, soon after the result, he spoke about new terminology. He said there are only two castes in the country. One is the गरीब है, वो एक जात है, और गरीब लोगों को मदद करने के लिए जो लगे हुए हैं वो दूसरा कास्ट है, और हमारी काम है इन दोनों के हाथ मजबूत करना. इसका मतलब it's also a message to India Inc., to the corporate world. Look, you may be clamoring for reforms, and you may have reasonable, to make profit and all that, but henceforth the thrust of growth will be to remove poverty. Yes, you are entitled to your reasonable profit, but at the same time, do not expect us to be lenient about crony capitalism. Any approach has to take care of how many jobs it will deliver, how it will improve lives, how it will change the difficult conditions that people have faced for so long. I think that is a broad contour that he has outlined with these addresses that he has made, since Lok Sabha results have come out on May 23rd. कुमार, अगर आपका ध्यान मैं इस तरफ आकर्षित करूं कि जैसा इलेक्शन से पहले भी कैंपेन में जो हम देख रहे थे कि एक तो फार्मर्स डिस्ट्रेस, किसानों के लिए जो पीएम किसान योजना आई थी, हालांकि उसमें जो कहा गया वो था कि भाई अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं है जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं सरकार, मगर एक इनिशिएटिव था कि गवर्नमेंट इज़ वेल अवेयर ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स विच आवर फार्मर्स आर फेसिंग. दूसरा, प्रधानमंत्री का कहना था कि स्किल इंडिया के ऊपर उनका बहुत जोर था कि स्किल इंडिया जिस तरह से मेरे को लगता है कि जो अगले 5 साल आने वाले हैं उसमें प्रधानमंत्री ने जो विजुलाइज किया था कि आप रोजगार के पीछे, सरकारी नौकरियों के पीछे भागने की बजाय अगर एक जो स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जो कारोबारी की, एक व्यवसायी की एक स्पिरिट है, अगर वो इम्बाइब करें और आप ऐसे रोजगार के अवसर युवा पैदा करें. और प्रधानमंत्री ने हमेशा, अगर आप पिछले 5 साल में देखें तो इस फैक्टर की तरफ, इस पहलू की तरफ बहुत जोर दिया है कि हमारा देश में जो 65% लोग हैं वो 35 साल की उम्र के आसपास, उससे कम है. तो एक जो यंग डेमोग्राफिक डिविडेंड जो मिलता है इंडिया को, वो एक बहुत बड़ी बात है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है इतना हमारे पास, उसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाए. और जो योजनाएं भी बनी, जैसे आयुष्मान भारत, संसार की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जिसमें कि गरीबों को 5 लाख तक की सुविधा इलाज की है. पीएम किसान भी हुआ, सौभाग्य जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन का था. तो इस बार, और जिस तरह से शेखर ने बात की जन भागीदारी की, अगर देखें प्रधानमंत्री मोदी का जो स्टाइल था, जो उनका काम करने का तरीका भी था, वो जनता के साथ डायलॉग में काफी विश्वास रखते थे. तो चाहे तालकटोरा स्टेडियम में डायलॉग हो बच्चों के साथ, चाहे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में डायलॉग हो सीएस के साथ, चाहे आकाशवाणी में मन की बात हो जैसे आपने जिक्र किया, और इसमें भी वो सबके सजेशन, सबके सुझाव लेते थे, और जो फोन भी करता था उसके फोनोज भी सुनवाए जाते थे. तो अब जो जन भागीदारी और इस तरह की जो स्कीम्स मैंने बताई कि, तो अब सेकंड टर्म में जो जोर रहेगा वो किस तरह से जन भागीदारी से फीडबैक लेकर, आप समझते हैं सरकार के कई सारे प्रोग्रामों को, कई सारे कार्यक्रमों को रीट्यून किया जाएगा. एक कंटिन्यूटी की बात है क्योंकि लोगों ने जो वोट दिया है, अगर हम मैंडेट को समझें, इस तरफ भी शेखर का भी ध्यान ले जाऊंगा कि कंटिन्यूटी विद स्टेबिलिटी, क्योंकि हमारे साथ भी आकाशवाणी में जो चर्चाएं हुई उसमें एक ये पहलू काफी उभर के आया कि लोग एक स्थायित्व चाहते हैं. ये ना हो कि रोज रोज पता चले कि आज कोई रूठा बैठा है, कोई प्रधानमंत्री पद के 10 दावेदार हो गए. तो एक जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण जो देश को नुकसान उठाना पड़ता है, एक तो वो नहीं उठाना पड़ेगा, और एक कंटिन्यूटी जो पॉलिसीज की थी उसमें लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है. विनय, आपने बड़ी अच्छी बातें कही कि जैसे कि प्रधानमंत्री की जन भागीदारी जो अभी शेखर बता रहे थे, और किसान योजना, स्किल इंडिया जो उनका एक विजन के अनुरूप है, योद्धा वाली बात है, कर्मयोगी वाली बात है, खुद को करना और करवाना, और एक कार्यकर्ता वाला भाव. मुझे लगता है कि विश्व में शायद ही कोई ऐसे नेता होंगे जो कि खुद ही झाड़ू की बात हो तो झाड़ू लेके बैठ गए, नॉट फॉर की फोटो वाला सेशन छपास और वाला, ऐसी भाव से नहीं. अभी भी ज्यादातर काम खुद ही करते हैं. जहां तक किसान की भागीदारी की बात है, मुझे लगता है पहली बार कोई भी सरकार ने जो कहा सो किया. पहले आपको ही पता होगा कि वेस्ट बंगाल से कई रिपोर्ट आई, हमारे खाते में 5,000 आ गए, किसी ने कहा मेरे खाते में 2,000 आ गए. तो किसका आया? जब लोगों ने पता किया, भारत सरकार की तरफ से आए हैं किसानों को जिनका फसल बर्बाद हो गया था. पश्चिम बंगाल की कहानी है, और कई राज्यों में उनके खाते में पैसे पहुंचे, जो कि
आम जन के लिए, वहां के लोगों के लिए एक आशाजनक कदम था। इनका सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट था कि वो हुआ। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किसानों के कर्जा माफी लेके आए थे, ये 6 महीने हो गए, लेकिन वहां जो है जिस तरह से नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, पैसे लोगों को नहीं पहुंचे और एक तरह से उन्होंने ठगा महसूस किया। तो अब मध्य प्रदेश का रिजल्ट देख लीजिए आप, राजस्थान का रिजल्ट देखिए, छत्तीसगढ़ का रिजल्ट देखिए, कर्नाटक, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी, तो जो उन्होंने कहा आज तक वो छलावा, पीएम ने कहा नो, आई विल जस्ट सेइंग दैट विल बी डन, दैट शुड बी डन अकॉर्डिंगली टू अंत्योदय वाला फार्मूला। जस्ट गो ऑन द अंत्योदय प्रोग्राम, कि जिसका है हक उसको मिलना चाहिए, उसको मिले, उस तो वहां तक पहुंचे। उसके अलावा जो आयुष्मान भारत की बात आई है, तो वट एवर आई केम थ्रू द डिफरेंट रिपोर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, ये जो प्रोग्राम है इन्होंने काफी कई जगह मुझे यूपी में लोगों ने बताया कि जस्ट वोटर्स ऑफ द एसपी एंड बीएसपी वोटेड बीजेपी ड्यू टू, नहीं मुझे घर का मिला है, आई हैव गॉट द आयुष्मान भारत का इंश्योरेंस मुझे मिला है और ये सुविधाएं हमें मिल रही है। तो ये जो एक कहा जाए अभूतपूर्व सरकारी कार्यक्रमों को सीधा पहुंचाना, जो नीडी है इसके वहां तक उनको मिलना, ये जो सिस्टम की बात है, इसमें चैलेंजेस भी है, लेकिन जो इन्होंने किया है मॉनिटरिंग सिस्टम विद द कैनवासिंग सिस्टम, जस्ट कन्वेइंग टू द पब्लिक, जो वो बार बार कह रहे हैं कि हम यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स को हमको नहीं देखना है, हमको देखना है कि जो हमारे सामने में आम जन है और उसमें हमारे जो वोटर्स ग्रुप में नहीं देखना, वोट बैंक नहीं बनाना किसी को, चाहे वो माइनॉरिटीज की बात करें या आम जाति की बात करें, जो हमारे इंडियंस हैं, जो सबका विश्वास की बात उन्होंने कही है उसके तहत। और जहां तक स्किल इंडिया की बात है, तो पता होगा कि पिछली बार सरकार में कुछ उनको शिकायतें आई, उन्होंने हटा दिया, जो कंसर्न मिनिस्टर था, कि काम इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा था। तो ही इज सो सीरियस अबाउट द स्किल इंडिया एज वेल एज द किसान योजना के साथ साथ जो गरीबों को जितने प्रोग्राम मिले हैं, चाहे आप उज्ज्वला योजना की बात, they is trying to empower the person concerned beyond the caste, creed and religion, कि they are Indians, they should be benefited from our whatever we are just making the programs for them, and that is important for the all Indians, to the people, for the people, of the people, whatever definition of the democracy. I think that going to be proved now really to the people, of the people nahi, for the people, really implemented at the ground earth, and that is a big achievement for the Modi government. And now they are more focused, new the continuity and stability you are talking about, that's a good thing. And there also उनका एक विजन है, that should be कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव साथ साथ हो, इसीलिए खर्चा बचे, समय बचे। Shekhar, if we just go back to what PM said at NDA's speech, which also touched upon the past as well as signaled the future, he coined a new slogan. You know, he's very fond of coining these names, and where he said that he would be guiding path for him, NARA, N-A-R-A, National Ambitions and Regional Aspirations. And Prime Minister Modi said NDA is moving forward on 2 tracks, one on regional aspirations and the second on national ambitions. And he said the combination of the two is necessary for acceleration of growth. So now from here, and then another very emotional, at a very emotional note, BJP headquarters in his victory speech, he had said that I promise you that the work you have given me in the coming days, I will not do anything with bad intentions. कुछ बदनीयती से नहीं करूंगा, यही शब्द थे उनके। एंड देयर कैन बी मिस्टेक्स, गलतियां हो सकती हैं व्हाइल डूइंग वर्क, बट देयर विल बी नो वर्क दैट विल कम आउट ऑफ बैड इंटेंशंस और इल इंटेंशंस। जैसे मैं कह रहा था कि स्टेट्समैन लाइक अप्रोच जो दिखाई प्रधानमंत्री ने इसमें, मगर जो वाइटल इश्यूज हैं पिछले 5 साल में अगर हम देखें और इस इलेक्शन में देखें, तो नेशनल सिक्योरिटी वाज एट द सेंटर ऑफ कैंपेन, which Prime Minister also harped upon his various speeches. Then tackling terrorism and the foreign policy, which Prime Minister himself was in the driver's seat in guiding the foreign policy of India, and continuity of economic policies, economic development. He's very keen about carrying on in his interviews to various newspapers, which he said that, you know, banking reforms and taking banking system down to the ground level, poor people. His Jan Dhan Yojana was part of that. So we can see some on these 4 crucial issues. I would like your comments. National security, zero tolerance for terrorism, India speaking with a strong voice, and we have seen what happened in United Nations as far as Azhar Masood was concerned, and continuity of economic policies and foreign policy. Yes, all these areas that you have outlined, these are the areas where we know what exactly is the government thinking. And we must also remember that this time the BJP manifesto has a special section called 75 milestones, which are specific goals that have been set, whether it's regarding housing, drinking water, increasing irrigation, bringing more areas under irrigation, doubling the farmers' income. All these are milestones that the Prime Minister has said should be achieved, you know, when India turns 75 in 2022.
And also, if you take into account what he said in Varanasi today, where the Prime Minister addressed his Karyakartas, he said for any problem, कोई भी समस्या हो, उसका solution यही है, एक पारदर्शिता, transparency, and दूसरा कठिन परिश्रम. So the hard work and transparency, and with some amount of दूरदृष्टि, some foresightedness, and you are able to foresee the issues and problems, but you have to do it in a transparent manner. That is a way forward. That is a way that India can march towards in realizing its fullest potential. And that is the strong message from the Prime Minister. As far as foreign policy is concerned, because Prime Minister Modi had developed good rapport with several world leaders. So naturally, and he lays great stress on Indian diaspora in all the countries, there is a strong presence of NRIs. And whenever Prime Minister Modi has gone, whether it is Australia, whether it is UK or US or Canada, he has addressed Indian diaspora and Indians living there who have made these countries their home. And his charm and appeal has, transcended. It was, beyond expectations, the way, the rousing welcome which Mr. Modi got in all these countries. And his rapport also with the powers that be, whether it is Vladimir Putin in Russia or Israel's Netanyahu or the new US President Donald Trump, who is nearing the end of his term, and whether it is Crown Prince of UAE, the Kingdom of Saudi Arabia. He has had built very good rapport with all these world leaders. Yes, and these rapport with the national interest in mind, because the biggest challenge for the Prime Minister is to again revive the economy, because economy is waiting for that kind of thrust. Particularly, it needs more capital, it needs more availability of funds for the industries, for entrepreneurs. So that is the thrust area is economy. And you mentioned about his contacts with the outside world, which is again towards making India the destination for growth, higher growth, and so that world countries and world companies make India as a partner, therefore, which can generate jobs, which can change lifestyle. There is a lot of emphasis on partnership, and that partnership requires, this kind of rapport, and which the Prime Minister has built over the last 5 years. That is why, as you mentioned, the response that has come, like you mentioned, Netanyahu, who even put out a video of his colleague, my dear friend. That is the way he addressed the Prime Minister. So there is warmth, they know him, he knows them, and all this can be of a great help in pushing India's interests. See, the whole idea is to push And with India. US and China engaged in trade war, naturally the Prime Minister's a very warm message came from Xi Jinping, Chinese president. We have seen the kind of rapport which Prime Minister has built with Xi Jinping. So that, my point is that all these factors come handy. You can speak to the topmost leader of the other country, and there are a lot of apprehensions about how India is going to deal with China. The Prime Minister has shown in the past that India has dealt with China on its own terms. So many analysts, many foreign policy experts have said that in this trade war between US and China, it is India which stands to gain, because India has a great market. India has bourgeoising middle class. When it comes in terms of potential, India has everything. And the challenges are also there. You mentioned about the trade surplus problem between China and US, and also now the sanctions on Iran. This is also a new area which can affect our supplies of crude and their prices also. So there are a lot of challenges, but in terms of vision, in terms of clarity, in terms of what is the approach that should be adopted, the Prime Minister Modi has a rich experience of the last 5 years. So therefore, the direction that can expect from this government is related to all the priority areas, whether it's agriculture, industry, investment, because the whole idea is there should be a good growth so that the lives of our people can be bettered. कुमार राकेश, अगर हम शेखर से पूछे थे, जैसे प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं आपने स्वयं देखी, तो मोदी जी का जो अपील है इंडियन डायस्पोरा को और फॉरेन पॉलिसी में जिस तरह से अग्रणी रहकर उन्होंने भारत की विदेश नीति को आगे बढ़ाया, तो अब लगता है उस पर और फोकस और जो रहने वाला है, और जिस तरह के इक्वेशंस, जिस तरह के संबंध भारत के लीडिंग पावर्स के साथ हैं, चाहे वो चाइना हो, यूएस हो या इजराइल हो, थोड़ी टेढ़ी खीर जिसको माना जाता है, उसको भी प्रधानमंत्री मोदी ने काफ़ी अच्छे से हैंडल किया, चाहे रशिया हो। तो इनको देख के एक बहुत बात करते विदेश नीति और इकोनॉमिक आर्थिक विकास, इन दोनों एरियाज की तरफ अगर आप देखें तो क्या लगता है आपको कि प्रधानमंत्री मोदी जरूर
विदेश नीति के ऊपर बहुत जोर देते हैं और भारत का जो आज पूरे विश्व में जो सम्मान और जो स्थान बना है वो पिछले 5 साल की जो मेहनत थी उसको देखते हुए ही बना है। विनय, देखें आप पिछले चुनाव को 1952 से लेके आज तक के चुनाव को, देश में पहली बार सुरक्षा, विदेश नीति और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 3 मसले को लेकर के चुनाव लड़ा गया। खास करके विकसित देशों की ये पहले थी कि वहाँ सुरक्षा और विदेश नीति पर वो चुनाव लड़ते थे। यहाँ सुरक्षा भी मुद्दा बना और विदेश नीति बना। जो फॉरेन पॉलिसी 2014 से लेके 2018-19 तक जो मैंने देखा, यूएन में भी देखा उनको, यूएस में भी देखा, यूरोप में भी देखा, और जो भी समझने की कोशिश की, उनका जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग रहा, जो उनका वर्किंग रहा, वो काफ़ी मतलब इम्प्रेसिव, टू द पॉइंट एंड कनेक्टिविटी के साथ। उन्होंने एक बात की, दिल और दल वाला मामला, कि जब किसी से मिलो तो दल भावना से नहीं, दिल की भावना से मिलो। तो ये जो उनका एक नया सोच का तरीका है और जो काम करने का तरीका है, तो उसमें इन्होंने काफ़ी नए माइलस्टोन तैयार किए। और अभी एक स्टेटमेंट मैंने देखा चाइना के एम्बेसडर का कि हमारे दोनों के बीच में जो संबंध है या जो भी बातें होती हैं, एक घर में 2 भाइयों की तरह। चाहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का देख लीजिए, जो उन्होंने फोन पे बात की, फोन पे बात की नहीं, उसके पहले भी उन्होंने बोला, तो लोगों ने अपोजिशन ने उसकी खिंचाई की कि भाई वो रहेंगे तो नेगेटिविटी की बात, लेकिन इन्होंने पॉजिटिविटी की बात कही कि मोदी आएंगे तो हमारी समस्याएं सुलझेंगी। और पहले भी इसको लेकर के काफी क्रिटिसाइज किया अपोजिशन ने कि बिना बताए नवाज शरीफ भी घर चले गए। दैट वाज द मेन थिंग एंड मेन फोकस टू फ्रॉम द आवर प्राइम मिनिस्टर, जस्ट ट्राई टू नो द एट द इमोशनल लेवल। ये जो कनेक्टिविटी का जो उनका एक सोच था, वहाँ जाके मिलना या उनको गिफ्ट देना या उनको बताना, तो इससे कि भाई कम से कम हम वी शुड अटैच विद द इमोशनल लेवल, तो बाकी तो हम कर लेंगे, पहले दिल तो मिले। तो आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने इतनी हिम्मत नहीं की। टेररिज्म की आपने बात कही कि आने के बाद जो देश में स्थिति रही वो सबको पता है। एक दिन में अभिनंदन का आना, लोगों ने अपने अपने नैरेटिव्स निकाले, लेकिन ये इनका फॉरेन पॉलिसी का इम्पैक्ट था। व्हाट एवर ही हैज डन लास्ट 5 years, वो उनकी एडवोकेसी थी कि वो प्रेशस में आकर के हमारे पास आया हो। तो वो एक मुद्दा तो है ही, और आगे जो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि फॉरेन पॉलिसी के तहत G8 और G20 जो मोस्ट पावरफुल जो हमारा ग्रुप है, उसमें हमारा सार्क का भी स्थान बनेगा। आसियान को लेकर जो उन्होंने काम किया है, अपने आप में कई माइलस्टोन बनाए हैं, जो इन्वेस्टमेंट को लेकर के हैं, कई जो साइन हुए हैं, आंकड़ों में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसे काम वहाँ पर किया उन्होंने, और लोगों ने बातें कही, तो अपने आप में अभूतपूर्व है, एक माइलस्टोन वाला है। ठीक कहा आपने कुमार राकेश। शेखर, ऑल इन ऑल इफ वी सी प्राइम मिनिस्टर्स विजन ऑफ न्यू इंडिया, people's participation in governing process, and a renewed push, as I said, to his vision of new India, and which Prime Minister himself said must shed the tag of being anti-poor. On such issues, we are going to see greater thrust with a focused approach in the next 5 years. As you know, the Prime Minister also lays in a lot of emphasis on last mile delivery, ensuring that things are delivered, and that he has done through his Pragati system of monitoring from Prime Minister's office itself. Yeah, because whatever ultimately you do, whatever programs you have, schemes you have, the result is more important. And as they say, proof of the pudding is, it should be in a position to eat it. So therefore, even foreign policy or anything, I think, has or will have the poor at the center of its approach, and which is Prime Minister is very keen. I think the lines that he mentioned soon after winning this election is that हमने गरीब के लिए काम किया 2014 और 19 के बीच में, और 19 में गरीब ने सरकार को बनाया है। It is the poor who have made this government. I think that's very strong message to the underprivileged sections. Now we'll have to see that how the government does deliver on these promises which Prime Minister has made, his outreach to minorities, especially Muslims, his stress on pro incumbency wave, as he said in his speech before NDA's parliamentary board meeting, that this pro-incumbency wave is woven with trust, lot of stress on trust. The trust was not only between people and government, but also among people themselves. This is a positive vote, and this thinking has given such a big mandate. So now the responsibility is to live up to these expectations, and as we know that Prime Minister Modi himself is a very hard taskmaster, so all the ministers, all the entire bureaucracy, country over, is going to see a very, very hard-working government in the next 5 years to come. Thank you, Shekhar. Thank you, Kumar Rakesh.
You were listening to a discussion on overall analysis of post-poll strategy of BJP. The participants were political analysts Shekhar Iyer and Kumar Rakesh. Vinay Kumar, journalist, initiated the discussion. This program was produced and presented by the News Services Division of All India Radio. You can also listen to this program on our website newsonair.nic.in. You may email your opinion about this program at airnsdtalks@gmail.com.